हेलो दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ वर्सो में। वर्सो पोलैंड की कैपिटल है और कल मैं विल्नस से चला था, वर्सो आया। वर्सो के मेन स्क्वायर पर हूँ। एक तरफ ओल्ड टाउन है, मेरे पीछे ये ओल्ड टाउन है, इधर ये सिटी ऑफ वॉल्स हैं, और अगर आप इधर घूमेंगे तो रिवर के उस तरफ न्यू टाउन। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सारा कुछ। ये देखिए, ये ओल्ड टाउन है वर्सो, ये रॉयल पैलेस। राजाओं की कहानी पूरे यूरोप में दिलचस्प है। हमारे यहाँ राजा इतने होते थे कि कौन बनेगा उस पे मारामारी होती थी। इनके यहाँ राजा इंपोर्ट किए जाते हैं। ये मेन स्क्वायर पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये सिटी ऑफ वॉल्स देखिए, एक छोटा सा खूबसूरत ओल्ड टाउन वॉर्सो सिटी में। बाल्टिक रीजन के तीनों कंट्री, एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया करने के बाद आज मैं आया यहाँ पे। और ये देखिए, तो जुड़े रहिए यूरोप की यात्रा का मज़ा लेने के लिए। दोस्तों, आज मैं हूँ वर्सो में। वर्सो पोलैंड की कैपिटल है और वर्सो के मेन स्क्वायर पर मैं हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग्स यहाँ बनी हुई हैं। तो देखिए, ये भी अपने आप में हर बिल्डिंग के ऊपर छोटी छोटी चित्रकारियाँ बनी हुई हैं। और ये बैरल ऑर्गन जो स्पेशली पॉलिश एक इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ खड़े होकर उसे बजा रहे हैं। ये देखिए, ये मेन स्क्वायर है। स्क्वायर लगभग सभी के एक जैसे हैं, सब जगह रेस्टोरेंट है। अब ये देखिए, ये बस इसके अंदर है, वो सब बज रहा है और ये उसे चलाए जा रहे हैं। देखिए, एक बार और मेरा गाइड आगे जा चुका है, मैं उन्हें जाके अभी दोबारा से पकड़ लूँगा। तब तक के लिए आपको पेरिस का ओल्ड टाउन बाय बाय, सॉरी वॉर्सो का ओल्ड टाउन बाय। सेंटर में ही, वर्सो के सेंटर में, ओल्ड टाउन के सेंटर में अब हम ये पहुँचे हैं सिटी वॉल्स में। इन सिटी वॉल्स को देख के ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे डुब्रोनविक की याद आ रही है। ये देखिए, So what was happening to prevent the gate from being attacked? A very easy thing. They built the barbican. An additional ये मेरे fortress that was protecting our city. How? During the war times, they were placing cannons and guns at the bottom, and on the top there was... Day of your life is great. In Poland, it's something completely opposite. How are you today? Awful. Why? It sucks. What sucks? Oh, come on, everything. The weather would go bad tomorrow, and my bus was late today, and the COVID is on the rise, and the politics are go bad, and my mother-in-law is coming in 3 months, and my son would fall ill in school, and so on. So for the first 10 minutes of the conversation, you complain. The others complain at you. And that's why I said we never smile in the first 10 minutes of the conversation. But watch out. If you survive it, then you will be greeted with Polish hospitality. We would open our hands that wide. Even if we don't know you, we invite you home right away and we serve you food. That's the first thing. We serve you food and you have to taste everything. Even if it's the most disgusting thing on earth, like let's say the tripe soup or the black soup made of duck blood or whatever else arrives, you have to taste it, you have to say it's great, and then you have to watch out if you don't leave your plate empty. If you dare leaving your plate empty, the likes of me, because in my family my wife does the fixing things and I do the cooking, then I would look into your plate, and we are better than the Stasi and the KGB combined in learning that your plate has just got empty and you need more food. So to avoid the situation that you hear the usual story of my mothers, and I think the Israelis who have had any experience with
Polish-born Jewish people, that would be the same. My mother always used to say like, oh come on, I've been making that for 7 hours before you came. How come that you would not stand the 58th dumpling? They are also tasty. If this doesn't work, the ultimate argument of my grandmother comes, which is, eat the 5th plate of the chicken broth I prepared for you. When I was your age, it was 1946 and we had nothing to eat but bread and water. Right, so that is actually something you can't fight with, and you have to eat it. So for your own sake, leave anything at the plate. Right now, once you know it, you can feel free to go to grab a meal or a beer. If you feel like, oh, it's 1 o'clock and I don't feel like drinking beer, remember that when I'm on holiday, my wife allows me to start at 12. If I'm at work, I start at 5. If I was German, I would feel way better because they start at 4. Once beer rhymes with fear, right? But it's Poland, so we start at 5, but you can start at 12. Thanks for coming, and now you can pin a medal of merit to your chest because 2.5 hours you have survived. And the thing is that if you would like to leave a comment on that tour, a good one or a bad one, you are kindly advised to go to tripadvisor.com to find Walkative Warsaw, and do not feel bothered that since we came back to the streets, people started to write reviews of Krakow, Wrocław, Berlin, or any other tours that we run in the Warsaw division. That's called COVID mist probably, and it affects mental health a bit as well. So I bet that you would find Warsaw and you would put a comment. We are really grateful for hearing back from you because it makes us work better, and it also boosts our self-confidence. Just in a moment, before I launch the last thing, I would like to ask you if you were recording. If you were recording, then my kind advice is not to put it anywhere in social media. दोस्तों, मैंने आज बताया था कि मैं आज वर्सो में हूँ, तो वर्सो में सारा दिन घूमने के बाद मैं आज आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह जो पहले फैक्ट्री थी, लेकिन अभी उसे शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। ये देखिए, ये आप देखेंगे ऊपर बिल्कुल फैक्ट्री की तरह ही है अभी भी सब चीज़ें, और नीचे होटल्स, कैफ़े, शॉप्स बन गई हैं। और ये दोनों हैं मेरे होस्ट। हेलो, सो कैन यू प्लीज़ रिमूव योर मास्क? Welcome. है ना? Welcome to And- Perogi. And he is the most, yeah, you can say what I want to say after most. So guys, this is the old factory, which is made as a nice and fancy place where we have different bars and cafes. So let's go with us. So Vitali, so ये देखिए बिल्कुल फैक्ट्री की तरह ही यहाँ अभी तक इन लोगों ने अपना चीज़ें रखी हुई हैं, बस बाहर और कैफ़े में बदल दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी वायरिंग्स और सब चीज़ें। सॉरी, अब देखेंगे, देखिए सब चीज़ें ऐसे ही हैं अभी तक। और एना और विताली वर्सो में मेरे होस्ट। टेम्परेचर तो 10 डिग्री है, लेकिन हवाएं बहुत तेज़ हैं, तो ठंड लग गई है। पता नहीं तबीयत सही रहेगी या ख़राब होगी। देखिए फ्लोर भी बिल्कुल ऐसा ही है, चलने के लिए बिल्कुल फैक्ट्री की तरह। तो लोग इनोवेटिव हैं, पता नहीं। चलिए मैं यहाँ किसी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक का आनंद लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।